Assalamu alaikum everyone. The topic that we are going to study today is from chapter 2 of physics. The chapter name is kinematics. तो कुछ टॉपिक्स हैं जो आज हम इसके अंदर कवर करेंगे। आने वाले लेक्चर्स के अंदर हम लोग बाकी टॉपिक्स को कवर करेंगे। सो सो हम ये तीन टॉपिक्स आज कवर करेंगे: रेस्ट एंड मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन एंड स्केलर एंड वेक्टर्स। ये सारे टॉपिक्स हैं जो आज की वीडियो के अंदर हम कवर करेंगे। सो स्टार्टिंग आउट विद दिस चैप्टर, हम सबसे पहले ये देखेंगे कि इस चैप्टर के नाम का मतलब क्या है। व्हाट इज काइनेमेटिक्स? सो स्टार्टिंग आउट विद काइनेमेटिक्स, हम इसकी डेफिनेशन से स्टार्ट लेते हैं। काइनेमेटिक्स इज अ स्टडी ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट विदाउट डिस्कसिंग द कॉज ऑफ इट्स मोशन। सो बेसिकली हम इसके अंदर ये डिस्कस नहीं करेंगे कि व्हाट इज़ द कॉज ऑफ दैट मोशन। हम इसके अंदर जस्ट ये डिस्कस करेंगे कि हमारे पास जो बॉडी है, आफ्टर द कॉज ऑफ इट्स मोशन वो मूव किस तरह से कर रही है। व्हाट इज़ द नेचर ऑफ इट्स मोशन। सो हम लोग इसकी कॉज पे नहीं जाएंगे बल्कि इसकी मोशन पर रहेंगे। इमोशंस की कौन कौन सी टाइप्स हैं और किस तरीके से बॉडी मूव कर रही है। तो इसके अंदर हमारे पास जो सबसे पहली डेफिनेशन आती है वो है विच इज़ रेस्ट एंड मोशन। तो ये दो इस तरह के कॉन्सेप्ट हैं जो एक दूसरे के कॉन्ट्रेरी हैं। कोई भी चीज़ अगर रेस्ट पर होगी तो वो मोशन में नहीं होगी, और अगर मोशन में होगी तो रेस्ट पर नहीं होगी। तो अगर हम बात करें रेस्ट की, तो इट मीन्स के a body is said to be at rest if it does not change its position with respect to its surroundings। तो एक बॉडी अगर किसी एक प्लेस पर पड़ी हुई है और वो वहाँ से मूव नहीं करती विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग्स एट एनी टाइम, तो वो हमारे पास रेस्ट पर है। और अगर वो मूव करती है तो हमारे पास मोशन पर है। इट इज सिंपल एज दैट। लेट मी give you an example for this one. Let's say we have this rectangular box which moves from point A at which is at point A at time t1, and it is at point B at time t2. So this body is moving with respect to its surroundings. So this rectangular body is basically is in motion. It is not at rest. Okay, so next let us discuss the types of motion that we have. Basically, there are three types of motion that we are going to discuss today. The first one is translatory motion, the second being rotatory motion, and the third being vibratory motion. First of all, हम discuss करते हैं कि translatory motion क्या होती है। सबसे पहले इसकी definition देखते हैं। Definition से पहले let me give you a general concept. अगर कोई भी body किसी भी path के along move करती है विदाउट रोटेटिंग अबाउट इट्स ओन सेल्फ, तो वो आपके पास ट्रांसलेटरी मोशन होती है। हमारे पास एक बेहतरीन एग्जांपल अवेलेबल है। लेट्स सी, हम देखते हैं फेरिस व्हील की एग्जांपल को। द पाथ अराउंड विच दिस द बॉक्स ऑफ दिस फेरिस व्हील इज मूविंग इज अ सर्कुलर पाथ, as you can see. So the path itself is a circular path, but the body is not rotating about its own self. So body इस पोजीशन के ऊपर भी इसी तरीके से है, यहाँ पर भी इसी तरीके से रहेगी, यहाँ भी ऐसी ही है, यहाँ भी ऐसी है। ये अपने अपने एक्सिस के अराउंड रोटेट नहीं करेगी, बट the path that it is following, it can be anything. It can be a circular thing, it can be a straight line, or it can be any curved line. So this is basically the concept of translatory motion. इसकी definition के अंदर भी यही बताता है। The line that it is following may be straight or curved, uh, but the body will move along a line without any rotation. So this is the translatory motion. अगर हम इसकी further types को discuss करें तो उसके अंदर हमारे पास इसकी तीन टाइप्स बताई जाती हैं। ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर हमारे पास फर्दर लीनियर मोशन है, सर्कुलर मोशन है, और हमारे पास इसके अंदर रैंडम मोशन है। तो बेसिकली तीन टाइप्स ऑफ मोशन है हमारे पास ट्रांसलेटरी मोशन के अंदर: लीनियर, सर्कुलर एंड द रैंडम मोशन। सो it is simple as it defines. In linear motion, the path that the body is following is a straight line. Let's come back towards this example. यहाँ पे हमारे पास जो बॉडी थी, which it is moving in a straight line, so this is basically a linear motion. In circular motion, the body is going to follow the path which is
सर्कुलर। सो अगर हम पिछली एग्जांपल देखें जो हमने डिस्कस की है, इसके अंदर जो फेरिस व्हील वाली एग्जांपल है, इस दिस इज अ टाइप ऑफ अ सर्कुलर मोशन, क्योंकि पाथ द बॉडी इज फॉलोइंग इज सर्कुलर इन नेचर। अगर हम डिस्कस करें रैंडम मोशन को, तो रैंडम मोशन के अंदर भी द बॉडी मूव्स विदाउट एनी रोटेशन, but the path that it is following, it is random, so it has no such shape. It is completely random or irregular in its nature. Now let's come towards rotary motion. The second type of the motion that we are going to discuss today is rotary motion. In this type of motion, basically the body rotates around its own axis. So students काफ़ी confuse होते हैं between spinning और rotatory motion. Rotatory motion और circular motion को mix up कर देते हैं. तो the main difference जो book ने भी define किया है between the rotatory motion and the circular motion is uh, in the rotatory motion, the axis around which the body is rotating passes through its own self. तो axis body के अंदर से pass करेगा in case of rotatory motion. लेकिन in case of circular motion, जिस axis के around body rotate कर रही है या body move कर रही है, वो axis body के अंदर से pass नहीं करता. Let me give you a very good example. Let's say we have these types of motions. So this is the rotatory motion. इस अगर हम इस फैन को कंसिडर करते हैं, so the axis of rotation is passing through itself. तो फैन अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट कर रहा है. लेकिन अगर हम सर्कुलर मोशन की बात करते हैं, तो इसके अंदर हमारे पास जिस तरह सैटेलाइट है ये अर्थ के अराउंड मूव कर रही है, so the satellite will remain the same, will remain in this position at this point, this point, this point, or any of the point in this circle. ये अपनी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अराउंड रोटेट नहीं करेगी, बल्कि एक सर्कुलर पाथ में मूव करेगी, और इसका एक्सिस ऑफ मूविंग जिस एक्सिस के अराउंड ये मूव कर रही है, दैट विल पास थ्रू द अर्थ बट नॉट थ्रू द सैटेलाइट. सो ये हमारे पास मेन डिफरेंस है बिटवीन सर्कुलर मोशन एंड द रोटेटरी मोशन. Or we have a very good example here as well. Let's say if we see this top, the axis of rotation is passing through itself. Same for the football, the axis of rotation is passing through the football, and it is also passing for this wheel. The axis of rotation is this, and the wheel is moving around this axis of rotation, which is also passing through itself. And if we discuss this hand wheel, so at this point, if we draw a line into the screen, so this whole you can say steering wheel is rotating around this single point. And this is a very interesting concept discussed by it. So जो अर्थ की मोशन है अराउंड सन, इट इज़ ऑल्सो रोटेटरी एज वेल एज सर्कुलर. सो इसको अगर हम डिस्कस करें, अराउंड द ईयर जो अर्थ मोशन करता है अराउंड द सन, इट इज़ अ सर्कुलर मोशन. और जो डेली अपने स्पिनिंग एक्सिस है अर्थ की, जिससे हमारे पास डे एंड नाइट आते हैं, सो दैट मोशन इज़ अ रोटेटरी मोशन. And now third, we'll discuss about the vibratory motion. It is a bit of interesting thing to discuss, and also a different concept. So अगर हम इसको by definition discuss करें, so the to and fro motion of a body about its mean position is known as vibratory motion. अब इसको practical example के through देखते हैं कि इसका मतलब क्या है. Let's say we have this example. ये आपके पास walls हैं और उसके बीच में हम लोगों ने एक string attach की हुई है. जब हम इस string को disturb करते हैं, so it will go to and fro, and it will repeat this motion until it completely comes back to rest. So in this case, ये हमारे पास एक vibratory motion है. According to the definition, this is the mean position of the string, this is the to motion, and this is the fro motion. So the to and fro motion about the mean position of the string is called vibratory motion. And vibratory motion की ही एक type हमारे पास oscillatory motion भी होती है. Let's discuss this pendulum. This is the pendulum of a clock,
and now let's discuss its motion. So this is the mean position of this pendulum, and if we disturb it, so it will first go to and fro. So the to and fro motion of this pendulum of a clock around its mean position is called oscillatory motion. So these were the three types of motion that we discussed today: translatory motion, uh, rotatory motion, and the vibratory motion. So it is pretty much clear by now, and let us move towards the next topic that we have, which is called scalars and vectors. So फिजिक्स के अंदर बेसिकली हमारे पास दो फिजिकल क्वांटिटीज़ हैं। जब भी हम किसी चीज़ को मेजर करते हैं तो हमारे पास दो तरीके होते हैं जिसके थ्रू हम उसको मेजर कर सकते हैं, वन बीइंग द स्केलर क्वांटिटीज़ एंड वन बीइंग द वेक्टर क्वांटिटीज़। अब इन दोनों के अंदर डिफरेंस क्या है? अगर आपने किसी भी चीज़ को मेजर करना है, तो कुछ इस तरह की क्वांटिटीज़ होती हैं जिनको आप जस्ट उनकी क्वांटिटी, उनकी वैल्यू के थ्रू मेजर कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आपने किसी चीज़ का मास मेजर करना है। सो व्हाट इज़ मास? मास इज़ बेसिकली a scalar quantity. So a quantity which can be completely defined by its magnitude is called scalar quantity. ऐसी क्वांटिटी जिसके लिए हमें उसका मैग्नीट्यूड और उसकी डायरेक्शन भी चाहिए होगी, इट इज़ कॉल्ड अ वेक्टर क्वांटिटी। लेट्स से कि आप किसी चीज़ का मास फाइंड करते हैं विच कम्स आउट टू बी 40 kg। सो इट इज़ अ कंप्लीट इन्फॉर्मेशन। 40 kg आपके पास मैग्नीट्यूड है, तो this quantity is completely defined. You don't need any direction like 40 kilograms in north or 40 kilograms in east. So this is a scalar quantity. अगर आप वेक्टर की बात करें, so let's say कि आप किसी को एग्जांपल देते हैं या आप किसी को बताते हैं that you are moving towards you are moving at a rate of 3 kilometer per hour. This is basically your speed. So you're saying that you are moving at 3 kilometers per hour, but this is not the complete information. जब तक कि आप उनको डायरेक्शन नहीं बताएंगे that I'm moving at the rate of 3 kilometer per hours towards north. So this is the complete information. So vector is defined by its magnitude and direction, while the scalar is defined by its magnitude only. So this is the difference between both of these quantities, scalars and vectors.